in this video what we want to do is we want to learn a different form of writing loops. So loop ही लिखेंगे, जैसे while से काम हो रहा है exactly वैसे ही काम होगा यहाँ पर भी, but it's a little different. थोड़ा syntax अलग है, लिखने का तरीका अलग है, काम exactly same achieve करेंगे हम. Okay, so before we go into this, let's look at how exactly while loops work for us. So while generally जब भी हम यूज़ कर रहे होते हैं, हम कुछ एक नंबर लेते हैं जिसको कुछ इनिशलाइज करते हैं, कुछ ना कुछ वैल्यू लेते हैं जिसको इनिशलाइज करते हैं, फिर एक कंडीशन लिखते हैं while I less than let's say 10 or something like that, and then we do something and then we write something like this. We increment I by 1, 2, 3 or something, right? Like we basically have some initial value, there is some final value where you want to reach. This is the initial value, this is the final value you want to reach, and these are the steps you want to take, how fast you want to reach there, right? Almost हमेशा ऐसा ही होता है. That our while loop will have a starting position, we want to reach somewhere, and we want to have some way, some step using which we'll reach there. So इसका एक different version है in which basically you can write all these three things at one place. So generally these three things, what are these three things? Initialization, condition when to stop, and the changes you want to do at the end of each iteration. ये जो तीनों चीज़ें हैं हम इनको एक ही लाइन में इकट्ठा लिख सकते हैं, so that जब मैं देखूं उस लूप को तो मेरे को साथ के साथ समझ में आ जाए, अच्छा स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, जा कहाँ तक रहा है, और क्या स्टेप है जिसको लेके वहाँ तक पहुँचेगा. Okay, it's called the for loop. So for loop के केस में our syntax is going to be something like this. So we will first write the initialization, we will put a semicolon, then we will write the condition, we will put a semicolon, then we will put whatever increment or decrement you want to do, whatever changes you want to do in your variable as the third point. So we have three things separated by these semicolons. Okay, so this is called a for loop, and we want to see how to write for loops. Okay, great. Let's get started. So I'll create a new package, and I'll call this package for loop. Okay, it's generally package name we should start with lowercase words. So for loop. Now within for loop, let's create a file. So I'm going to write a very simple program. I'll find sum of first n natural numbers. Okay, so sum till n. Let's include main. Finish. I'll just copy a little bit of code which basically we had in the pattern, which was taking input. Okay, so this will basically, so I'll take this n input from the user and I'll find sum from 1 to n. So if we had to do this using while, we will start with something like this. I'll start with 1, I'll have some sum which I'll start from 0, and I'll work till my I is less than equal to n. I will increase my sum by I, I'll increment my I by 1. ऐसे ही कुछ करते थे. क्या कर रहा हूँ मैं, पहले 1 था सम I, तो मैंने सम के अंदर 1 डाल दिया, I को 2 कर दिया, सम के अंदर 2 भी ऐड कर दिया, I को 3 कर दिया, 3 भी ऐड कर दिया, I को 4 कर दिया, and I'll keep doing till the point I don't cross n. लेस देन इक्वल टू n तक मैं काम करूँगा, जैसे ही क्रॉस कर जाऊँगा मैं रुक जाऊँगा. ठीक है, एकदम बढ़िया चलेगा ये. आई डोंट थिंक इसमें कोई इशू होगा. सो एक बार फटाफट से प्रिंट करके देख लेते हैं, सम प्रिंट कर लेते हैं. सो लेट्स रन दिस. So it's waiting for our input. If we give 10, it gives us 55, which is exactly the sum of first 10 natural numbers. Okay, so I just want to change this code and use for loop for doing that. So let me just comment this code out. So I hope you remember multi-line comments. So slash star and star slash. Okay,
So this is the code which I could write using while loop. अब सेम चीज़ को फॉर लूप से करते हैं, ठीक है. सो एक सम ले लेते हैं 0. नाउ ये लूप जो हमारा चलेगा ये आई पे डिपेंड करता है ना, ऊपर वाला आई पे डिपेंड करता है ना, कहाँ से लेके कहाँ तक. सो आई विल इनिशियलाइज माई आई from 1. This is the initialization part. The first part is the initialization part. Then you put a semicolon. Then you write the condition I less than equal to n. This is the condition when you want to stop. You put another semicolon, and now you write after every iteration what are the changes you want to do. What do you want to do? You want to do I is equals to I plus 1. So the way to look at this is, the way to read this will be, for I is equals to 1 till you reach I less than n, increment I by 1, right? And what do you want to do every time? You want to add this I to your sum. Okay, so what we need to do here is sum is equals to sum plus I. So I don't have to write I is equals to I plus 1 here. I don't have to write that, because that has already been taken care into the changes you want to do after every iteration. So what's going to happen? The way it's going to run is, the first time it comes here, this initialization part will be run only for the first, before the first iteration. Start होने से just पहले हम initialize करेंगे, फिर हम condition check करेंगे, फिर हम जो अंदर काम लिखा हुआ है करने के लिए वो करेंगे, फिर नेक्स्ट आइट्रेशन पे पहुंचने से पहले हम इंक्रीमेंट करेंगे. ओके, सो द व्हाट्स बेसिकली गोइंग टू हैपन इज, लेट मी कॉल दिस एज इनिशियलाइजेशन, लेट मी कॉल दिस एज माय कंडीशन, लेट मी कॉल दिस एज माय बॉडी ऑफ माय फॉर लूप, एंड लेट्स कॉल दिस आफ्टर. सो व्हाटएवर यू डू वांट टू डू आफ्टर द बॉडी. ओके, सो व्हाट विल बी द फ्लो? You will increment, you will do the initialization only once, then you will check the condition. If the condition is true, you will go inside the for loop, you will run the body. Okay, whatever changes you want to do after running the body, you will do that. We will not do the initialization again. We will check the condition if we should continue doing the same work. If that is true, we will run the body, we'll do the changes, we'll again check for condition, and let's assume this time the condition fails, so we will stop our for loop. Okay, so this happens only once. This is checked before you do your work, this is done after you have run your iteration. Okay, so this part will be run after you have done with your iteration. This, before you run your iteration, you will check whether this condition is still true or not. Okay, it's basically absolutely simple. It's just a shortcut of while. While लिखने के लिए मेरे को 3-4 लाइनें लग गई थी, छोटा सा शॉर्टकट है. हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे एग्जैक्टली सेम चीज़. यहाँ पर हम पहले ये लाइन अलग लिखी हुई थी, ये कंडीशन अलग लिखी हुई थी, I is equals to I plus 1 अलग लिखा हुआ था. हमने इन 3 लाइनों को कंबाइन करके एक लाइन में कर दिया और हमारा ओवरऑल काम थोड़ा छोटा हो गया है. सो लेट्स क्विकली प्रिंट दिस एज वेल to make sure actually चल भी रहा है. So now if you will run this, let's take n is equal to 10 and we get our answer as 55, exactly what we were getting before. Okay, exactly same तरीके से चल रहा है, कोई फर्क नहीं है. कुछ चीज़ें इंटरेस्टिंग हो सकती हैं यहाँ पे. फॉर एग्जाम्पल, what if I want to say while I less than equal to n and also something else. कंडीशन देखिए ना हमने, मल्टीपल चीज़ें मैं एक साथ डालना चाहता हूँ. सो बहुत ही आसान है, बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. लेट्स व्हाट वी कैन डू इज, एंड ऑल्सो लेट्स से आई एम सेइंग दैट आई विल फाइंड द सम टिल n, बट ओनली इफ द सम इज लेस देन 100. 100 से ऊपर पहुँच गया तो मैं रुक जाऊँगा. सो एंड ऑल्सो सम लेस देन 100 doesn't make sense, but just for demo I am taking and also sum less. So whatever the condition, you can just put them together. Okay, so if you have multiple condition, you will just put them between these two semicolons. What if I want to have two variables, I and j, both of them are part of my loop? So what you can do is I is equals to 1. Generally अगर मुझे 2 वेरिएबल चाहिए होते हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ,
मैं ऐसा कुछ करता हूँ, मैं लिखता हूँ int I is equals to 10 and then I write int j is equals to 15, right? See, the only issue here is if you will try doing something like this, if you put a semicolon here and you take a j which is 15, for loop confuse जाएगा, क्योंकि for loop को 2 सेमीकोलन चाहिए होते हैं, तुमने यहाँ पे 3 दे दिए। for loop को 2 ही सेमीकोलन चाहिए होते हैं। So if you do want to initialize multiple things, what you will have to do is, instead of, you don't have to write int again, so I is int, j is int, and instead of putting a semicolon, we'll put a comma. So int I is equals to 1, j is equal to 15. That means please initialize I as well as j for me. Okay, so let's say I initialize j by 1 as well, so it will initialize I as well as j from 1. So मल्टीपल चीज़ें इनिशियलाइज करनी है तो हम कॉमा लगा देंगे बीच में और हम मल्टीपल चीज़ों को इनिशियलाइज कर पाएंगे। अगर मुझे मल्टीपल कंडीशन चाहिए तो मैं उनको एंड ऑल्सो या और से कनेक्ट करके यहाँ पे डाल दूंगा। एक से ज़्यादा चीज़ों को इंक्रीमेंट करना है मुझे, एक से ज़्यादा चीज़ों को चेंज करना है आफ्टर में, सो मैं j इज इक्वल्स टू j+1 भी यहीं पे डाल सकता हूँ विद अ कॉमा। सेमीकोलन नहीं लगाएंगे, कॉमा लगाएंगे, ठीक है। सो इन अ फॉर लूप यू हैव 3 components: initialization, condition, changes that you want to do, right? changes में मल्टीपल चीज़ें चाहिए तो बीच में कॉमा लगा देंगे हम। कंडीशन में मल्टीपल चीज़ें चाहिए तो एक कंडीशन कुछ ना कुछ तरीके से कंबाइन कर रहे होंगे कि दोनों चाहिए तो एंड ऑल्सो लगा रहे होंगे, दोनों में से कोई भी एक चाहिए तो और लगा रहे होंगे, सो वो हम मैनेज कर रहे होंगे। एंड ये जो पार्ट है इनिशियलाइजेशन, इसमें भी हम अगर हमें 2 चीज़ें चाहिए तो हम कॉमा लगा देंगे बीच में। Okay, thank you.